وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. My respected elders, brothers, we have been discussing since the beginning of the year, the month, that what are the spiritual diseases. Like physically, we commit sins and Allah will hold us responsible for those sins. Likewise, internally also, spiritually, there are certain things that are considered sins in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will hold us responsible for that. Like drinking, gambling, dealing in interest is haram. Likewise, showing off also, having jealousy for others, backbiting, all these things are haram also. And we have to answer to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment regarding these things. We had covered backbiting. What's the remedy for that? We had covered having malice and grudge for others in our heart. What's the remedy for that? Today, inshallah, we're going to talk about jealousy or hasad, as we say in Arabic and Urdu. So, 3-4 items we are going to mention. What is the definition of jealousy? What are the 3 levels of jealousy? And how does jealousy come into existence? And what is the prescription and remedy for it? So, the first thing is, what is the definition of jealousy? How would we know that I am jealous from the opposite person? So, in the light of the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the ulama say, jealousy is that when you see good in the opposite person, when you see a ni'mat of Allah in the opposite person, it could be name, fame, intelligence, wealth, beauty, knowledge, anything of this world, or anything of the hereafter also. He's very pious, he easily wakes up for tahajjud, he gives a lot of sacrifice, he balances deen and dunya, any type of thing. And when you see that specific goodness in it, you start burning from inside. You have this burning sensation that why does he have it? Why cannot I have it? One is you feel good, oh Allah, he has it, grant me this also. This is another way of seeing this. This is envy, as we say in English. But one is, why does he have it? He shouldn't have this thing. This feeling is, in other words, jealousy. Hasad ki taarif kya hai? Bear with me, those who don't understand Urdu. Inshallah, we'll do translation also in between. Hasad ki taarif kya hai? अल्लाह ने किसी सामने वाले को कोई अच्छी चीज़ दी हुई है, दुनियावी एतबार से या आखिरत के एतबार से, चाहे वो माल हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, सलाहियत हो, इल्म हो, खूबसूरती हो, दीनदारी हो, दीन और दुनिया को दोनों को लेके वो शख्स चल रहा हो, तो फिर हमें अंदर से जलन शुरू हो कि उसको ये नेमत क्यों मिली है। एक है कि या अल्लाह, जैसे तूने इसको ये नेमत दी है, मुझे भी दे दे, ये तो मुस्तहसन है, पसंदीदा है, इसकी तरगीब है। लेकिन उल्टा सोचना कि इसको ये नेमत क्यों मिली है, किस तरीके से छिन जाए इसके पास से, इसको गीबत कहते हैं। ऐसे ख्यालात जब जहन में आना शुरू, इसको हसद कहते हैं। ऐसे ख्यालात जहन में आना शुरू हो तो फिर हमें ख्याल रखना चाहिए। Now, what are the 3 different levels of hasad? One is the lowest level and one is the worst level. The lowest level or the beginning level of hasad is that, oh Allah, the ni'mat that he has, I should also get this ni'mat. It stays with him, that's fine. Or whether he's deprived of it, doesn't make any difference to me, but I should also receive this ni'mat. I should also have it. This is the lowest level of hasad. As I said, one is, oh Allah, grant me also as you have given. So that's fine. But why does he have it? I should also have it. Whether it stays with him or not, this is the lowest level, beginning level. The second level, which is worse than the first, is, oh Allah, first deprive him of this ni'mat, then give it to me. First deprive him of this ni'mat, and then give it to me. And the third and the most worst level is, oh Allah, I don't care I get it or not, but you take it away from him. I don't care I get it or not, but he should not have it. He doesn't deserve it, na'uzubillah. We become like God, na'uzubillah, that we say, no, he doesn't deserve this thing. So these are the 3 levels of hasad. hasad की 3 किस्में या 3 दर्जे क्या हैं? सबसे इब्तिदाई दर्जा ये कि अल्लाह, जो इसके पास नेमत है, इसके पास रहे कि ना रहे, लेकिन मुझे मिल जानी चाहिए। एक है अल्लाह से मांगना कि अल्लाह मुझे भी दे दे ये नेमत, जैसे अच्छी नेमत आपने इनको दी है।
लेकिन ये जलन के अंदाज में है, मुझे ज़रूर मिलनी चाहिए चाहे इसके पास रहे कि ना रहे। इससे इब्तिदा होती है। उसके बाद वाला दर्जा ये है कि या अल्लाह नहीं, मुझे तो बाद में मिले, पहले आप इससे छीन लें, इसके पास नहीं होनी चाहिए। तीसरा और सबसे ख़राब दर्जा ये है कि या अल्लाह मुझे मिले कि ना मिले, बस इससे ले ली जाए। तो शुरू उससे हुई कि मुझे मिलनी चाहिए चाहे रहे कि ना रहे, फिर जहन में आता है कि नहीं इससे पहले निकल जानी चाहिए इसके हाथ से, फिर जहन में आता है कि नहीं मुझे मिले कि ना मिले, बस इसके पास नहीं होना चाहिए। गोया कि हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की तकदीर पे एतराज़ करते हैं कि या अल्लाह इसको तो मिलनी नहीं चाहिए थी, आपने तो गलत दे दी इसको, ये चीज़, ये तो हकदार ही नहीं था इस चीज़ का। So in other words, we are objecting on the qadr and destiny of Allah subhanahu wa ta'ala, that, oh Allah, na'uzubillah, you gave it wrong to him. Okay? It was a wrong decision. It was a wrong distribution. He never deserved this thing in the first place. So it is such a severe sin. It is such a severe disease. So this gives us the definition, and this gives us the three levels of hasad or jealousy. Now the question arises, why does this jealousy come into existence? Okay? Why does it happen? So the ulama say one reason is that we have malice and grudge for other people in our heart. This is the beginning ground. This is where the groundwork starts, that the person starts having jealousy for that person. As we mentioned last time, what is malice and grudge? Having some ill feeling in the heart. And there are two types of malices and grudges. One is that person has hurt you, and one is that person has not hurt you. If that person has hurt you, you forgive him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but still if you see him after 5 years, you will still remember that hurt or that wound that he had caused to you, though you have forgiven him. Now Allah will not hold us responsible because this is human being, this is human feeling. We can forgive someone, but we cannot cleanse our hearts all the time against that person. So as long as we are not transgressing and harming him, Allah will not hold us responsible. This malice and grudge is not haram. But the other part of other side, the other type of malice and grudge, he has not hurt you, but once again, since he has something good which you don't have, you have this ill feeling against this person, and once in a while you harm him also. This is haram. For no reason you are keeping ill feelings against that person. So this is the beginning ground. This is this malice and grudge that eventually transfers into hasad also, into jealousy also. So once these feelings start coming in our mind and heart, we should just push them out. Say astaghfirullah, seek forgiveness from Allah. वजह दो वजूहात हैं, एक वजह मेरे जहन से निकल गई है, इंशाल्लाह फिर आएगी तो आखिर में अगली दफ़ा अर्ज़ कर दूंगा, एक रह गई है। तो दो वजूहात जो अहादीस की रोशनी में है, उनमें से एक वजह है किसी के बारे में दिल में बुग़्ज़ और अदावत का होना। बुग़्ज़ और अदावत से इब्तिदा होती है हसद की, और पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था बुग़्ज़ और अदावत दो किस्म की होती हैं। एक, कोई हमें नुकसान पहुंचाए, हर वक्त हमें तंग करता है, तकलीफ देता है, हम अच्छा करते हैं फिर भी वो हमारे साथ बुरा करता है, तो ना चाहते हुए दिल में उस दिल खराब हो जाता है, उससे बुग़्ज़ और अदावत, कीना पैदा हो जाता है। लेकिन हम जो है उसको माफ़ भी कर देते हैं, उस कीने के तकाजे पे, डिमांड पे अमल नहीं करते। लेकिन इंसान है, 4-5 साल के बाद भी वो हमें नजर आएगा, वो तकलीफ हमें याद आ जाएगी कि इसने हमें नुकसान पहुंचाया था। तो इस पे अल्लाह पाक पकड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इंसानी फितरत है। दिल हमेशा 100% साफ नहीं हो सकता, कोशिश कर सकते हैं, हो नहीं, जरूरी नहीं है कि हो। लेकिन जिस बुग़्ज़ और अदावत और कीने पे पकड़ है, वो पकड़ ये है कि उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वही उसकी अच्छाई या कोई नेमत की वजह से आपका दिल खराब हो रहा है, नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इस पे पकड़ होगी। इससे फिर जो है वो हसद शुरू होती है, बुग़्ज़ और अदावत से बात शुरू होती है, सेकंड लेवल हसद में जाके वो तब्दील हो जाती है। तो जैसे ही मुझे और आपको महसूस हो कि ये ख्यालात आ रहे हैं, हम फ़ौरन इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगे। और सब अपने आप को सुकून पहुंचाने का सबसे बेहतर तरीका ये कि या अल्लाह मुझे भी इस नेमत में से कोई हिस्सा दे दे। इससे आदमी को सुकून हो जाता है कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ। एंड द बेस्ट वे टू क्लेंस आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस ग्रज एंड मैलिस एंड जेलसी इज, ओ अल्लाह, दिस नेमत दैट यू हैव गिवन टू हिम, ग्रांट मी आल्सो दिस नेमत।
Just by making dua, you feel that inner content, the inner comfort comes in. In the light of the ahadith, there are two reasons why it begins. If anybody recalls, can remind me, it has slipped out of my mind. And if it comes at the end, I'll let you know next time, inshallah, when we sit. So this is the reason why jealousy comes into existence. Now, what is the punishment for this? The famous hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the hadith of Abu Dawood, Iyyakum wal hasad. Beware of jealousy. Stay away from jealousy. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أو الْعُشْبَ. Because jealousy consumes the good deeds, eats up the good deeds, like fire consumes and eats up dry wood. How long it takes for the fire to consume dry wood? Quickly, seconds, minutes. If the wood is wet, it takes a while to burn. So likewise is jealousy. Very quickly, we won't even realize it will destroy our good deeds. Aw al-ushba. Ushb in Arabic is dry grass, not wet grass. Again, the fire cannot easily burn wet grass. And burning dry grass is much faster than dry wood. So this is an example of how jealousy destroys my and your good deeds. इसकी सज़ा क्या है? अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कि गीबत से अपने आप को बचाओ, हसद से अपने आप को बचाओ, हसद से दूर रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है. और या तो ये फरमाया या फिर फरमाया अल-उश्बा, या सूखी घास को खा जाती है. गीली घास और गीली लकड़ी को आग इतना आसानी से नहीं जला सकती, वक्त लगता है, लेकिन सूखी लकड़ी मिनटों में ख़त्म हो जाती है. तो मुझे और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा हमारी इतनी मेहनत से की हुई नेकियां जो हैं इसकी वजह से ख़त्म हो जाएंगी. So we should always remind ourselves that this is, forget about others, this is detrimental to ourselves. दूसरों को क्या नुकसान पहुंचेगा? हम अपना नुकसान कर रहे हैं. Now coming the last thing for today, what's the remedy? इलाज क्या है इसका? What's the prescription? So the ulama say, in the light of the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there are two remedies, there are two prescriptions. One is that we should tell ourselves that this is the distribution of Allah subhanahu wa ta'ala. Whomever Allah wills, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Whomever Allah wills, Allah gives without any measurement. This thing would have been good for him, not for me. That's why Allah gave him this thing. And if I don't have it, there is some hikmat and wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala in this. And I am content. I will ask Allah, but if Allah still doesn't give me, I am content with it. If we start having this feeling, we start reminding ourselves when our children say something, when our spouses say something, we remind them in this way that this is what Deen teaches us, this will be really comforting and will be a source of contentment and will keep us away from jealousy. Okay? As the example, many examples are there, as you know. One very easy to understand example is Suratul Kahf. 3 incidents have been mentioned there. And one incident is the story of Musa and Khazir alayhim as-salam. So the second incident that took place between these two giants was Musa alayhi salam and Khazir alayhim as-salam were going, and there was a young boy playing. Without any reason, apparently zulman, oppressively, Khazir alayhi salam killed him. So Musa alayhi salam, being a Nabi, could not bear it. He said, why did you take a life without a valid reason? You killed this boy, he didn't do anything wrong to you. So when at the end the Quran tells us Khazir alayhi salam was giving the reasons, what was the reasons? In the books of tafsir and the ayat it says that this was the only child of the parents, and Allah had written in taqdeer, in destiny, that when he will grow up, he will become rebellious, he will be a disobedient servant of Allah, and because of his disobedience he would put his parents into the test also, and they might also to go off the track from Deen. So Allah wanted to save the parents from the test, that they might not drift away from Deen because of the love, excessive love of this one child, because that was the only child. Allah took this away, and in one narration, Allah replaced that boy with a girl, and there was
was one prophet, and according to other narration, two prophets came out from the womb of that girl. So apparently a child was taken away. But from the prospect of the future, this was something good. Allah brought Nabi in that progeny, in that generation. And the taking away of the child long term was good for that, for the mother and for the father. So we should understand this and remind ourselves that this is the distribution of Allah. What is the second? Let me translate in Urdu and then inshallah we'll move up. हमें अपने आप को तसल्ली ये देनी चाहिए कि ये अल्लाह पाक की तकसीम है. कैसे? दो इलाज हदीस की रोशनी में उलमा ने लिखे हैं हसद के, कि ये अल्लाह की तकसीम है, नसीब है, अल्लाह पाक जिसको दे दें. अल्लाह ने अगर हमें जो दिया है तो ये हमारे लिए बेहतर है. वो चीज़ जो सामने वाले के पास है हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, इसीलिए अल्लाह पाक ने हमें नहीं दी. क्योंकि अल्लाह पाक बेहतर समझते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या नहीं है. और इसकी बहुत सारी मिसालें कुरान हदीस में मिलती हैं. मूसा और खज़र अलैहिमुस्सलाम के वाक़े में सूरह कहफ के अंदर अल्लाह पाक ने जिक्र किया, 3 हादसात पेश आए. दूसरा हादसा क्या था? बच्चा खेल रहा था, बगैर किसी वजह के खज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी जान ले ली. तो मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, नाहक कत्ल हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा कि तुमने गलत किया है. तो जब आखिर में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो वजूहात खज़र अलैहिस्सलाम ने बयान की, उनमें से वजह ये थी कि ये इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, और ये आगे जाके सरकश बनता, अल्लाह का नाफरमान बनता, और वालिदैन की जो इससे मोहब्बत है, इस मोहब्बत की वजह से वो भी बेदीनी की तरफ चले जाते, गोया के इम्तिहान में आ जाते. अल्लाह पाक ने उनको इम्तिहान से बचाने के लिए इसकी जान ले ली, और उसके बदले में अल्लाह पाक ने एक बेटी दी उनको, जिसके पेट से, जिसके रहम से एक रिवायत के मुताबिक एक नबी पैदा हुआ, दूसरी रिवायत के मुताबिक 2 नबी पैदा हुए. तो जाहिरी तौर पे तो औलाद छीन ली गई, लेकिन मुस्तकबिल के एतबार से देखें तो वो उस खानदान में 2 नबी पैदा हुए. तो अल्लाह को पता है, अल्लाह के इल्म है कि अल्लाह पाक हमारे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा जहन चूंकि छोटा है, जितना भी हम चाहें हम उसकी हिकमत को दुनिया में नहीं समझ सकते. ये बहुत बड़ी तसल्ली की वजह है. चाहे हमारा कोई दुनियावी नुकसान हो, चाहे जानी नुकसान हो, सब्र करने का क्यों हुक्म दिया है? कि भाई अल्लाह को हिकमत इसकी पता है कि क्यों ये चीज़ हुई है. तो ये एक इलाज है हसद का. द सेकंड रेमेडी फॉर हसद इज that we should tell ourselves we are giving away good deeds to the opposite person, because the hadith says you are burning your deeds. So by doing jealousy, by backbiting, all these sins, we are for free transferring our good deeds to the opposite person with whom we are backbiting or regarding whom we are jealous. Okay, so nobody wants to give his or her good deeds for free. So this should be a stopper for us, that no, we should not be jealous of that person. Somebody came to Sufyan as-Sawri rahimahullah, a great giant of hadith, a tabi'i. Tabi'een are those people who saw the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whom we call the Sahaba radiyallahu anhum. So tabi'i is a singular, tabi'een is plural. So he is a great tabi'i, he's a giant in hadith, in the field of hadith. Somebody came to him, and Imam Abu Hanifa rahimahullah is his contemporary. Both were in the same time. Somebody came to Sufyan as-Sawri and said, what is your view regarding Abu Hanifa rahimahullah? He said, Imam Abu Hanifa rahimahullah is a bakhil, is a stingy person. So that person was shocked. So I haven't heard anything bad about Imam Abu Hanifa rahimahullah. Forget about being a critique of his knowledge. You are attacking his akhlaq. You are attacking his character, that he is a stingy and bakhil person. So he said, wait, what I mean to say is, he does not give his good deeds to anyone, he takes the good deeds from other people. He is so stingy, he does not give his good deeds to the opposite person, but he takes the good deeds of the opposite person. People backbite about him, he doesn't backbite about anyone. Nor does he allow anyone in his majlis, in his sitting, to backbite about anyone. So this is the meaning, he is a stingy person. So this was the mindset of our pious predecessors. They took everything, even deen, in a business perspective, not in a wrong manner. Just to explain, I'm using these words. In a business perspective, that how is it affecting our hereafter? If it's making good in the hereafter, go ahead and do it. If it's not, just leave it plain and simple.
दूसरा इलाज इसका ये है कि हम, इट्स डन इंशाल्लाह, इफ एनीबडी वांट्स टू लीव दे कैन लीव, आई विल जस्ट ट्रांसलेट इन उर्दू एंड रैप अप। दूसरा इलाज हसद से बचने का ये है कि आदमी ये सोचे कि मैं अपनी नेकियां मुफ्त में किसी को दे रहा हूं, क्योंकि गीबत जब आदमी करता है तो अपनी नेकियां उसके हवाले कर देता है। हसद करता है, हदीस क्या कहती है, नेकियां जल जाती हैं, तो वो नेकियां उसके हवाले कर रहा है। और इसकी मिसाल कैसी है, सुफियान सौरी रहमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह एक ही ज़माने के हैं, हम असर हैं। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ताबिईन में से हैं, हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताबिईन में से हैं, फ़िक़्ह और हदीस दोनों के इमाम हैं। तो किसी ने सुफियान सौरी रहमहुल्लाह से आके पूछा कि आपकी राय क्या है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में, तो उन्होंने फरमाया कि एक कंजूस और बखील आदमी है। तो वो शख्स हैरान रह गया कि ये तो सुना है कि भाई इनके इल्म में ये मसला है या हदीस में ये मसला है, आप तो ज़ात पे हमला कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि उसके उनके अखलाक ही अच्छे नहीं हैं। तो कहा कि रुको, मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो जो है कंजूस हैं, चूंकि वो दूसरों की नेकियां फ्री में ले लेते हैं और अपनी नेकियां किसी और को देते नहीं हैं। दूसरों की नेकियां मुफ्त में ले लेते हैं और अपनी नेकियां किसी को देते नहीं हैं। कैसे? वो किसी की गीबत नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग उनकी गीबत करते हैं तो उनकी नेकियां इनको मिल जाती हैं। वो अपनी मजलिस में अपने शागिर्दों को इजाजत नहीं देते कि वो किसी की गीबत करें, लेकिन दूसरे लोग उनसे हसद भी करते हैं, उनकी गीबत भी करते हैं, तो फ्री में नेकियां उनकी तरफ ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ये सोचने का अंदाज है जो मुझे और आपको इख्तियार करना चाहिए। हम दुनिया में जो भी हो, कोई जो भी बोले, असर तो आएगा, चाहे जितना मजबूत इंसान क्यों ना हो, वो टूटेगा जरूर। उसके मुंह से एक दिन बात निकलेगी जरूर कि भाई मेरा क्या कसूर है कि तुम लोग मुझे बदनाम कर रहे हो। तो वो कोई हरज नहीं है, लेकिन तसल्ली देने की चीज क्या का तरीका क्या है कि आया ये चीज मुझे आखिरत में फायदा पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा रही है। अगर फायदा पहुंचा रही है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। नुकसान पहुंचा रही है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। Whatever was said and heard, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding also and allow us to act upon these things. Ameen. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakallah khair.